Effect of dielectric on charge, potential difference, and energy stored in capacitor. Charge, potential difference, and energy stored in capacitor. ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ उसके ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ dielectric insert कर रहे हैं. In one case capacitor is disconnected from battery, means charge कर ले and उन्हें disconnect कर ले. And in second case capacitor remains connected to battery. In second case capacitor remains connected to battery. तो पहला केस अपन डिस्कस करते हैं when capacitor is disconnected from battery. ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ C0 ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ V0 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ. ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, that is Q0, ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹ, that is Q0 is equal to C0 V0. Q0 is equal to C0 V0. After that ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ बैटरी तो उतार लिया, चार्ज करके आप इसमें उतार लिया, प्लग कर ले. Now a dielectric of dielectric constant K is filled in this capacitor. डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, then its capacitance will increase. capacitance increase ਹੋਊਗੀ. ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ capacitance ਇਹਦੇ ਨਾਲ? k times. new capacitance is k times C0. new capacitance is k times C0. न्यू कैपेसिटेंस के C0 आ जाए. जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ Q0. ਨਿਊ ਚਾਰਜ that will remain same. ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, या तो कोई चार्ज बाहर भी नहीं निकल सकता. So charge on plates of capacitor will remain same. Capacitance change करेगी, तो वोल्टेज भी चेंज करेगी. न्यू वोल्टेज की आएगी, न्यू चार्ज ओवर न्यू कैपेसिटेंस, न्यू चार्ज ओवर न्यू कैपेसिटेंस. That is equal to Q0 over Kc. That is V0 by K, because this value is V0. Charge same रहा, capacitance K times होगी. Charge same रहा, capacitance K times होगी. Denominator K times हो गया, V0 by K. अच्छा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट, Q0 ਬਾਈ A epsilon naught starting से. अनम्यूट करके दसियो बेटा दैट की इफेक्ट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ते की इफेक्ट पै रहा होगा? Sir, no effect. Why?
सर क्योंकि सर क्यू चेंज नहीं हो रहा और एरिया भी सेम ही है। ओके सर बट पोटेंशियल तो चेंज हो गया, डिस्टेंस हाँ जी सेम है। बिल्कुल। तानिश बोलो। सर 1/k टाइम्स हो जाएगा सर, 1/k 1/k टाइम। और किनु किनु समय लग गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/k टाइम्स। अगेन ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, if we fill it with dielectric, electric field is 1/k times original electric field। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ सेम ही रख रहे हैं, चार्ज Q नॉट का सेम ही है, Q नॉट बाय K A एप्सिलॉन नॉट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हुआ है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज 1/k टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस है। हैंड रेज कर दो जल्दी जल्दी। सर बोलो बेटा। सर आप ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ Q ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਰ, KC ਨੋਟ V ਨੋਟ। हाँ जी बेटा, एक्चुअल च देखो इफेक्ट देखो ना, ਆ ਪਲੇਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, Q0 ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ ठीक है, हुण चार्ज नहीं किते जा रहे, ना ही कोई होर चार्ज आ रहे। यस सर ठीक है, दैट्स व्हाई चार्ज रिमेन्स सेम। ओके सर कैपेसिटेंस ते इफेक्ट पे है, चार्ज ते नहीं पिया, तो वोल्टेज ते इफेक्ट पै गया। सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फील्ड ते इफेक्ट पै गया। सर फिर फॉर्मूले नाल क्यों सर हो ਜਾਂਦਾ? फॉर्मूले च बेटा जे तुसीं देखोगे, तुसीं Q डैश की वैल्यू CV डैश कह रहे हो, वो है गया, ठीक है। C K टाइम्स हो गया, V 1/k टाइम्स हो गया, Q सेम है। ओके सर ओके सर ओके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਔਨ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ। effect on energy stored in capacitor। कैपेसिटर च एनर्जी स्टोर ते की इफेक्ट होगा। इनिशियली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ that U0 जो initially C, हाफ सी either it is Q0 square by 2C or it is half C V0 square। बिल्कुल कोई एक रिजल्ट यूज कर ले, दोनों नाल ही पता लग जाए। चलो आप स्टार्टिंग च पहला करते, न्यू एनर्जी आप कहांगे न्यू चार्ज over new capacitance, 2 times new capacitance। New charge is same as original, capacitance is Kc, energy कितनी आ गई U0 by K, 1/k times। मैंने दूसरे मेथड नाल करना वो भी कर लो, एक ही गल है, तो रिजल्ट ही सही है। U0 is half C V0 square, new energy is half new capacitance new voltage the square, half Kc into V/K the square। इत्थों भी आ रही है एनर्जी U0 by K।
इसनों ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ तो डिस्कनेक्ट करके आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, देन चार्ज रिमेन्स सेम, वोल्टेज इज 1 by k times, capacitance k times, electric field 1 by k times, and energy stored is 1 by k times. When capacitor remains connected to battery, when capacitor remains connected to battery, again आप एक C नॉट वैल्यू का कैपेसिटेंस ले रहे हैं, Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤਾ, dielectric of dielectric constant K, dielectric of dielectric constant K, it is inserted in the capacitor. ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਓ ਸੇਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? voltage. voltage जो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, that potential difference will remain same, voltage will remain same. हैंड रेज करो जिन्हों पता लग गया, new voltage will be V naught. Now charge will change, capacitance का पता है, capacitance will change, capacitance is K times C naught. Now charge will change, charge K Q times. dash is K times. बिल्कुल K times C naught V naught, that is K times Q naught. New charge is K times Q naught. Means ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, then battery will supply some extra charge. Battery will supply some extra charge. Q extra ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? On inserting dielectric, battery कुछ extra charge supply करूगी, extra charge कितना आ रहा होगा? K minus Q naught. K minus 1 into Q naught. Q naught. बिल्कुल फाइनल चार्ज है K Q naught, इनिशियल चार्ज से अपने को Q naught, the extra charge जो बैटरी ने देता है that is K minus 1 into Q naught. Extra charge supplied by battery is K minus 1 into Q naught. Voltage same. Electric field दे दसोगे, electric field between plates of capacitor. same है K times. K times. Effect on electric field in capacitor. same रहेगी सर सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ही नहीं हुआ. बिल्कुल, that will remain same. Electric field समझे? E into D is potential difference. If potential difference between plates remains same, then electric field will remain same. देखो चार्ज K टाइम्स हो गया, Q by A epsilon naught ਹੁੰਦਾ है, डाइलेक्ट्रिक आ जाता 1 by K टाइम्स ਹੁੰਦਾ है, पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, चार्ज K टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चेंज होएगा 1 by K टाइम्स, so it remains same. पोटेंशियल तो इजीली समझ सकते हैं, V नॉट सेम है, V is E into D, D सेम, V नॉट सेम, EV सेम. हम देखिए इफेक्ट ऑन एनर्जी स्टोर. K times. Good. Effect on energy stored in capacitor. देखो ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
इंक्रीज करोगे एनर्जी। एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी तो आ रहे हैं, इनिशियली एनर्जी से अपने कोल U naught is half C naught V naught square, half C naught V naught square. New energy is half new capacitance, new voltage square. This is half K C naught, voltage remains same, into V naught square. So new energy is K times U naught. New energy is K times U naught. When capacitor remains connected to battery, then potential difference remains same. Charge is K times, capacitance is K times, energy is also K times. First question note करियो. We have two capacitors. Each of capacitance 10 microfarad and charge to 100 volt. पहला चार्ज कितने हुए? स्टेटमेंट ध्यान नाल लिखियो. When a dielectric slab of dielectric constant 4 is inserted in C1, slab is only inserted in C1. सिर्फ इस कैपेसिटर ਨੂੰ completely fill ਕੀਤਾ. Only C1 is completely filled. It's लिखना ਤੁਸੀਂ extra charge supplied by battery and extra energy stored in capacitor. ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ. Only C1 is filled. बैटरी रिमूव नहीं ਕੀਤੀ है. In this circuit, only C1 is filled with dielectric of dielectric constant 4. समझ आ गई होगी. फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होना. मेथड लगाओगे Q is equal to CV, आंसर्स आ जाए. इनिशियली तो कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कीता सी. C1 है 10, C2 है 10, C equivalent is 10 into 10 over 10 plus 10, 5 microfarad. Charge on capacitors is 100 into 5 CV, that is 500 microcool. वो 500 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ. बैटरी ने टोटल 500 सप्लाई. Initially energy stored in capacitor ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is half into 5 into 10 power minus 6, 5 microfarad into 100 square. So this is 2.5 into 10 raised to power minus 2 joule. This is value of energy stored in capacitor. Now when dielectric is inserted, now dielectric is inserted in only C1. C1 the new value आ गई है 4 into 10,
that is 40 microfarad. C2 will remain the same, that is 10 microfarad, and new value of equivalent capacitance is product by sum 40 into 10 by 50, that is 8 microfarad. New charge on capacitors is new capacitance into voltage, that is 800 microcoulomb. Charge extra is new charge minus original charge. Value आ रही है अपने को, this is 300 microcoulomb. That is 300 microcoulomb. New energy stored is half into 8 into 10 power minus 6, half C. V is again 100. New energy stored in combination is 4 into 10 power minus 2 joule. Extra energy stored is 1.5. 1.5 and 10 for -2. वैल्यू आगे सॉल्व करके 1.5 into 10 power minus 2 जूल, और आप कह सकते हैं 15 मिली जूल, राइट? 15 मिली जूल. पहले डायग्राम बनायो, फिर स्टेटमेंट नोट कर दे. C1 and C2 capacitors ने having capacitance C0. एक स्विच लगाई हुई है. स्टेटमेंट लिखियो ना. Initially, switch is closed. Initially, switch is closed. Initially, no appa close किया switch में. Both the capacitors are charged to V0. दोनों ही बैटरी ਨਾਲ कनेक्ट हो जाएंगे. In this case, total energy stored in capacitor is U1. जो इधर स्टोर हुई है, जो इधर स्टोर हुई है, total energy stored in this combination is U1. Clear? Total energy stored in this combination is U1. After that, the switch is opened. Then switch is opened and dielectric slab with K is equal to 3 is inserted in both capacitors. Now total energy stored is U2. Total energy after inserting dielectric, total energy stored is U2. अब कैलकुलेट करनी है वैल्यू U1 by U2. U1 by U2. करो ट्राई. लो सॉल्व करिए. Initially आप कह रहे हैं switch is open, sorry, switch is closed. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ V0 ਵੋਲਟ. ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ V0 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ V0 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ U1 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ half C0 V0 square plus
ਹਾਫ ਸੀ ਨॉट ਵੀ ਨॉट ਸਕੁਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ और ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀ ਨॉट ਵੀ ਨॉट ਸਕੁਅਰ after that switch is opened capacitors v नॉट तक चार्ज सी स्विच ओपन करती चार्ज आया हुआ है एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोनों हुण जो एनर्जी आऊगी this C1 is still connected to battery. When capacitor is connected to battery and it's completely filled with dielectric, its energy becomes K times. K the value 3 put kar liyo. K times half C naught V naught square. सही. Second capacitor C2, this is disconnected from battery. Energy stored in this capacitor is 1 by K times half C naught V naught square. This is new energy. This is new energy stored in capacitors. ਹੁਣ calculate ਕਰ ਲਿਓ if U1 upon U2 ਦੀ value ਆ ਰਹੀ ਹੈ this is 3 by 5. U1 upon U2 is 3 by 5. आई गया तो हैंड रेस कर दे जाए K दी वैल्यू 3 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है रेशियो लो आंसर 3 by 5 आगे हैंड रेस कर दे कॉमन पोटेंशियल शेयरिंग ऑफ चार्ज and loss of energy when two charged capacitors are joined. Capacitors ने different potential difference ते अपन उन्हें charge किया है. Capacitors नो अपन different potentials ते charge किया है. Let's suppose अपने को दो capacitors ने कितनी capacitance है C1 दूसरे दी कैपेसिटेंस है C2. This C1 capacitor is charged to potential difference V1 and C2 is charged to potential difference V2. ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ Q1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ Q2. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ that Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ Q1 ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ -Q1 ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ Q2 ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ -Q2 ਡੈਸ਼. But in this case, potential difference across capacitors will remain same. Wire नाल connect हुए पहला भी idea किया है wire नाल connect करता that means potential difference जो इत्थे आ रहे है वो दोनों लिए same है. आप condition लिख सकते हैं that Q1 dash is equal to C1 into VC. And Q2 dash is equal to C2 into VC. इस केस च आपां कैलकुलेट करना है VC दी वैल्यू पहला कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है VC which is common potential. कैपेसिटर्स नु ज्वाइन करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है अपने को एक सिंपल जा लॉजिक है कि पहला कैपेसिटर्स ते चार्ज Q1 एंड Q2 सी इसनु आपा ज्वाइन करता तो आप कह रहे हैं कि
ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨਿਊ ਚਾਰजेस ਆ ਗਏ ਬਟ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ C1 to C2 मूव कर सकता है but total charge will remain same. बेस ध्यान च रखियो total charge will remain same. Q1 dash plus Q2 dash is equal to Q1 plus Q2. इथों VC की वैल्यू देखियो की आ रही Sir, Q1 plus Q1 Q2 plus upon Q2 C1 plus upon C2. C1 plus C2 C2. upon C1 plus C2 V1 V2 ਦੇ ਟਰਮਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Q1 dashes are C1 into VC. This is C2 into VC. C1 V1 plus C2 V2. So VC is C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. A logic यही आ रहे हैं that it's total charge over total capacitance. This is total charge over total capacitance. C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. क्लियर है इत्थे तक? हाँ नेक्स्ट क्लास बेटा ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰजेस ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ